Everyone wants to build a good habit, good lifestyle. Everyone wants to have a good life in the future. But the problem is how to do that. Hey guys, मैं रौनक and welcome back to the another episode. Today we are going to talk about one of my favorite book, that is Atomic Habit by the James Clear. This book, one of those books that changed my life. There are very few books that able to help me or that literally changed my mind, the way I look to the life, the way I look to the money, the way I understand business. There are very few books that changed my life, and Atomic Habit is one of those books that help me to generate a good level of understanding about how the system works or how we should portray it in the life. So today we are going to talk about the few lessons from these books that can help you to understand how you should develop your habits, how to build a reading habits, or how to get any habits going. You do not rise to the level of your goals, you fall in love with your system. This thing literally changed my mind. There is a problem with the understanding the habit and how to do the habits. Consider winner and loser. दोनों को भी एक मैच जीतनी होती है, आई गेस. कंसिडर एमआई और सीएसके, दोनों को भी आईपीएल जीतना ही है. बट द प्रॉब्लम इज हैबिट्स. और कंसिडर अ मैराथन. सब लोग मैराथन में, सबको वो मैराथन जीतनी ही है. बट द प्रॉब्लम इज गोल्स तो दोनों के सेम है, बट अगर उनकी हैबिट सेम नहीं हो तो कोई भी एक ही जीतेगा जिसकी हैबिट्स अच्छी है. सो यू शुड अंडरस्टैंड दैट देर इज़ अ नॉट प्रॉब्लम विद द सेटिंग द हैबिट्स, but you should understand that system is really important. So what is a system? System is nothing but whatever you do on the daily basis, whatever you do daily basis. Like अगर आपको मैराथन जीतना है तो आपको डेली उसके लिए प्रैक्टिस करने पड़ेगा. डेली आपको 1% इंप्रूव करना पड़ेगा, तभी आप मैराथन के लिए प्रिपेयर कर सकते हो. दिस इज़ हाउ व्हाट हैपन्स. So there is only difference between the winner and loser, that is a system, and you should know what is your system. You should be far more concentrate on your current trajectory than your current results. Well, what I want to say is, look at this graph. There is only 1% of deflection, and if 1% of deflection happens, then your life will go to the new direction, or your life will get to the new direction. So you have to understand what is 1% of deflection you want. Whether you want to good habits, that 1% of deflection, or you want to take bad habits through that 1% of deflection. That your current trajectory, like this is your life and this is going to happen like this, but your current trajectory, like whatever you do today, whatever you tomorrow, or whatever you did yesterday, these are going to matter far more important than your future plans or your future or whatever you are doing in the future. Say if you want to save money for the future, but if you are not saving today, then you will not save money in the future. Or if you want to be a good athletics tomorrow, but if you don't do gym today, then there is nothing going to happen tomorrow. If you want to pass exams tomorrow, but if you do not study today, then there is nothing going to happen tomorrow. So you have to understand your current trajectory, and you have to focus on your current trajectory than your future plans. When you fall in love with the process rather than product, you don't have to wait to give permission to be happy. You can be satisfied anytime your system is running. So this is really, really important. The problem is we tends to understand that happiness यानी कि reaching 100k subscriber, or happiness is having 10,000 plus followers, or whatever the happiness is. So the problem is, if you don't reach that goal, we will never be happy. But you love the process. Like I love making videos, I love talking with the camera, I love sharing my thoughts with you guys. So I love this process. So I don't look at the numbers, I don't look at how many subscribers I have, I don't look at what other people are doing. I love whatever I am doing. So that's why happiness is shooting this video, happiness is doing what I love. And this is something I realized in the recent times, that this is something I have to focus on. I love creating video, then I focus on how I can do it much better, how I can make videos much better. So this is what something I realized, and you should do this, and you should understand that whatever you are doing, start to enjoy that process. Otherwise, if you look at the numbers, or if you look at the end results, then you will never become happy. All big things come from a small beginning. A seed of every habit is a single teeny decision, but as the decision is repeated, the habit sprouts and the grow stronger. Roots stretch themselves in the branches together. So this is something I really important, that you should understand, that whatever the success is, or we call it as overnight success, but it does not happen overnight. Overnight success is a myth. You have to do it daily, you have to repeat it daily. अगर आपको जिम बगना है, like I started
फॉर द जिम फ्रॉम द लास्ट वन मंथ। एक या दो बार मैंने भी मिस किया था, बट आई वॉन्ट टू डू इट रिपीटेडली इफ़ आई वॉन्ट टू गेट अ बिग रिजल्ट। मैंने जब ये यूट्यूब शुरू किया था कुछ पता ही नहीं था कि एक्चुअली शुरू करना है कि नहीं, बट इन द लॉकडाउन आई डिड इट रिपीटेडली। नाउ आई कैन सी द ग्रोथ, नाउ आई कैन see that we are well connected. So if you want to do something great, you have to do it daily, you have to do it repeatedly. And if you do it daily and repeatedly, then you will get the big results one day, and people will then call you that overnight success. Some people spend their entire life waiting for the time to be right to make an improvement. Well, this is something purely wrong. I believe जो भी आपको शुरू करना है, जो भी आपको लाइफ में करना है, देन यू हैव टू स्टार्ट इमीडिएटली। अगर आप एक भी दिन लेट करते हो देन दैट बिकम्स डीमोटिवेशन। देन अगर आप एक वीक लेट करते हो देन फिर सोचते हो कि इससे कुछ नहीं होगा। अगर आप एक महीना लेट करते हो तो फिर तो आप उसके बारे में भूल ही जाओगे। सो आपको जो भी चीज़ करनी है अभी के अभी शुरू कर दो। ये वीडियो एंड होने के बाद शुरू कर दो। जो भी आपको पढ़ाई करनी है, आपको वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको मैराथन जीतना है, जो भी आपको करना है, यू हैव टू स्टार्ट इमीडिएटली। एंड डोंट उसको इंटरप्ट मत करना है। उसके जितना रेगुलरली कर सकते हो उतना करो कि दिस इज़ वॉट आई डिड फॉर माई लाइफ, दिस इज़ वॉट आई डिड फॉर माई यूट्यूब चैनल, दिस इज़ वॉट आई डिड फॉर माई इंस्टाग्राम फ्रॉम द लास्ट 2 years आई एम डूइंग दिस। ये बुक मैंने 2 साल पहले पढ़े थे और ये इस बार रिपीट पढ़ रहा हूँ कि बिकॉज आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड इन अ मच डीपर वे। सो इफ़ यू वॉन्ट टू स्टार्ट एनीथिंग, स्टार्ट immediately or else you will lose the motivation. When you can't win by being better, you can win by being different. Well, this is kind of very favorite line from this book, and I really love this line. And this is a tricky line also because you have to understand a lot of factor. Go to the any field, there are always a top level of people sitting, there are already top players are available, but the problem is how you can start and how you can make a difference, or how you can be available for everyone. And where this is something you can use. I know if you can be better, then obviously people will recognize you, but if you want to be more recognition, then you have to do it different. If you can't do it something by doing better, then do it something different, do it something extraordinary that no one is doing already, and then you can win majority of the audience. Greatest threat to success is not failure but boredom. You get bored with habits because they stop delighting you. If I want to, the problem is when you start doing something regularly and if you do not get any reward, like अगर आप एक्सरसाइज शुरू कर देते हो, आपको 1 महीने में रिजल्ट तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, कम से कम 1 साल या 2 साल उसके लिए काम करना पड़ेगा। एंड यही पे एक्चुअली में प्रॉब्लम होता है। when you start doing it repeatedly, एक मंथ के बाद you feel like यार अब नहीं करना चाहिए, you should not do it daily, आप उससे बोर हो जाते हो, and this is something very really problematic। और इसको आपसे slightly better हो कि आपको इससे बाहर निकलना है। अगर आप उसके बोर होने के लिए होना शुरू हो गए, then you have to do it with differently, you have to do it something with differently, you have to do it with the stack, and you have to understand that you have to do it daily, otherwise you will interrupt the compound effect and you will lose all the motivation. So always remember that success is not, or the failure is not depends upon the the factor, it depends upon if you get bored. So always remember, do not get bored with whatever you are doing, try to do it with the fun, try to add fun or try to add masala in your life so you don't get bored with your habit. Never miss twice. If you miss one day, then try to get back to it as quickly as possible. Well, this is one of my close to my heart, and this is I can really feel really good because ये एक चीज़ है कि जो हम रेगुलरली करते लग जाए तो भूल जाते हैं। मतलब इफ़ आई वांट टू प्लान, लाइक मुझे एक मंथ के लिए एक्सरसाइज करना है, लास्ट एज यू टोल्ड यू राइट, लास्ट मंथ आई स्टार्टेड डूइंग द एक्सरसाइज एंड द प्रॉब्लम इज़ एक दिन मैंने मिस किया था, बट ये डायलॉग और ये कोट मुझे रिमेंबर था कि नेवर मिस द ट्वाइस। लाइक आपको रात में ब्रश करने की आदत है, इफ़ यू डू इट लाइक एक बार आप मिस कर दोगे तो आपको सेकेंड टाइम भी मिस करने की आदत हो जाएगी, फिर आपको थर्ड टाइम मिस करने की आदत हो जाएगी, देन दैट हैबिट विल बिकम एब्सोल्यूट नथिंग फॉर यू। सो इफ़ यू वांट टू डू इट समथिंग रेगुलरली, देन ऑलवेज रिमेंबर दैट नेवर मिस द ट्वाइस। अगर कोई चीज़ करने में 2 मिनट या 10 मिनट लगते हैं, देन डू इट क्विकली एंड गेट रीड ऑफ दैट। सो अगर आप ये चीज़ रिपीटेड करते हो, देन दैट्स बिकम योर सिस्टम, दैट्स हैबिट्स बिकम योर सिस्टम, एंड दैट सिस्टम शेप योर लाइफ। सो दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट. Try to do it. Never miss anything twice. Decide the type of person you want to be and prove it yourself with the small wins. The biggest problem with our life is we try to get acknowledged from the other people. We try to seek for the others' opinion. But first you have to decide what you want to be. If you want to be a good person, if you want to win that match, if you want to, crack that exam, whatever you want to be, like athletic, you want to be athletic, you want to be singer, and you have to
प्रूव यूर सेल्फ विद द स्मॉल डेडलाइंस। मुझे यूट्यूबर बनना है, मुझे सिंगर बनना है, देन अगर मुझे सिंगर बनना है तो उसके लिए मुझे डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डेली खुद को कुछ ना कुछ मुझे फर्स्ट 4 कॉर्ड्स सीखने पड़ेंगे, देन उसके बाद वो 4 कार्ड्स का कॉम्बिनेशन सीखना पड़ेगा, देन हैव टू गो फॉर द सॉन्ग, देन हैव टू लर्न पॉप सॉन्ग। सो डेली या वीकली अगर मैं खुद को एक टास्क दूंगा या ये छोटी छोटी चीज़ें जैसे ही विंस में कन्वर्ट होती चले जाएगी, देन आई कैन बिकम द टाइप ऑफ द पर्सन। नो वन बिकम्स द टाइप ऑफ द पर्सन इन वन नाइट। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द टाइम इज रियली पावरफुल factor and time can literally change your life. Getting 1% better every day counts a lot in the long run. You know, obviously सबको लॉन्ग रन में कुछ सक्सेसफुल बनना है, कुछ ना कुछ बड़ी चीज़ें करनी है, बट द प्रॉब्लम इज इट ऑल लाइज इन द 1% डिफरेंस. 1%, what you can do today that 1% better than yesterday, what you can do tomorrow that is 1% better than today. So you have to understand that, always try to improve 1%. अगर आप मेरी पुरानी वीडियो जाके देखोगे या पुरानी वीडियो यूट्यूब ने आपको सजेस्ट की होगी, दोज आर वेरी वेरी डेंजरस वीडियो. उसमें ना ही कुछ ढंग की एडिटिंग थी, ना ही कुछ अच्छी चीज़ें थी. बट आई डिड इट रिपीटेडली, आई ट्राई टू इम्प्रूव 1% एवरी डे. हर एक वीडियो में आई विल ट्राई टू डू इट समथिंग डिफरेंट. हर एक वीडियो में आई ट्राई टू डू इट समथिंग मोर इंपॉर्टेंट और कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करता हूँ. सो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू बिकम अ प्रो एट द वीडियो एडिटिंग. और दिस वीडियो एडिटिंग that will help me to get better gigs, to get better projects in my life. And this is how you start. कुछ भी अगर आपको स्टडी करना है, then you have to do it 1% every day better, or whatever you are doing, try to stick with that and try to do it 1% every day. The 1% every day is much important than any other thing. These are the few things I learned from the Atomic Habit. This book is very close to my heart and very special to me. I really love this book. I am going to read it again maybe in the future. But if you have not read it, I will go and read this book. There is a link in the description. You can go buy that book. I will suggest you to at least read this book once in a lifetime, because this book will help you to change in a many different ways. You will realize how your habits can shape your future, how you can how you will be a better person, और क्या क्या चीज़ें आप लाइफ में कर सकते हो. सो इतनी सारी चीज़ें जानने के लिए आपको ये बुक डेफिनेटली पढ़नी चाहिए. इसमें इसकी सारे जो कोट्स वगैरह हैं मैंने अपनी इंस्टाग्राम पे पोस्ट किए हैं. सो यू कैन गो चेक दैट आउट इफ़ यू वांट मोर एंड मोर डिटेल्स अबाउट दिस. एंड I will see you in my next video. Bye bye, tata, take care.